Good morning, class 4. Now it's our SST class time. It's our second lecture of SST. So open your SST books, page number 71. Open your books. We have started our unit number 3 and chapter number 10, which is about our history, our past events, in which we have discussed about the ancient site, that which are the ancient site, the most famous one in Pakistan, in which we have discussed that in Pakistan there are total 6 ancient sites, which were the Mohenjo-daro, Harappa, Taxila, Mehergarh, Rahman Deri and Kot Diji, due to which we have discovered that कि हमारे पास्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह लोग थे जो कि यहाँ पर आबाद थे, जिनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड था, अपना लिविंग स्टाइल था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द civilization. Civilization is the society, culture, living style in particular era of particular people. So what is civilization? Civilization सोसाइटी को, कल्चर को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, किसी पार्टिकुलर टाइम में जिस तरह के वो लोग रहते थे, इस सब को हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? सिविलाइजेशन. Historians tells us that there was an advanced civilization around the plains of the river Indus in about 2600 BCE. So before the current era, BCE stands for before the current era. So before about the 2600 BCE, there were the place around the river Indus. There was an advanced civilization. Advanced. Why they called advanced? यानी कि वाई इट इज़ कॉल्ड एडवांस, क्योंकि उस टाइम के लिहाज से वो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी. मीन्स के दैट एट द दैट टाइम दे आर यूजिंग दैट टेक्निक्स विच इज़ नॉट कॉमन थिंग एट दैट एरा. यानी कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी या इतनी टेक्निक्स कॉमन नहीं थे, एंड एट दैट टाइम दे यूज द डिफरेंट टेक्निक्स. लाइक कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ग्रैनरी डिस्कवर की थी, उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो दीज वर नॉट कॉमन एट दैट टाइम. सो दैट्स वाई दे वर कॉल्ड द एडवांस, बिकॉज दे यूज द एडवांस्ड मीन्स ऑफ लिविंग. दैट इज़ अ long time ago. It is called the Indus Valley Civilization. So they live around the river Indus, or we can say जिनको हम दरिया सिंध भी कहते हैं. That's why this is called the Indus Valley Civilization. And the people were really ahead for that time. They used wheels, made pots and other vessels, and made things out of metals such as copper. They also made clothes. So ahead of time means कि उस वक्त के लोग अपने वक्त से आगे का सोचते थे, वो अपने से आगे का एक्ट करते थे. So they were thinking about the future, जो कि उस टाइम पे एक यानी आजकल के लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते थे. At that time they were the advanced civilization. They think about their future. So they used wheels, made pots जो कि different बर्तन बनाते थे, और other vessels means ships or large boat. Vessels means ships or large boat, and made things out of metal such as copper, जो कि मेटल से, सॉलिड मटेरियल से डिफरेंट टिपिकल हार्ड थिंग्स बनाते थे. रेड ब्राउन मेटल से विच इज़ कॉल्ड कॉपर. दे आल्सो मेड क्लॉथ्स, जो कि क्लॉथ्स भी बनाते थे. सो हरप्पा इन द पंजाब एंड मोहनजोदड़ो द माउंट ऑफ द दैट इन सिंध आर टू ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल sites.
So archaeological sites means these places belonging to the past. So we can see the ruins of Valley civilization, of the Indus Valley civilization in these places. These places are Mohenjo-daro, the Mound of Dead. Why it is called the Mound of Dead? The Mound of Dead means the mound of collections. अगर किसी चीज़ को पाइल करके इकट्ठा होके पाइल करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द माउंड. उसको हम क्या कहते हैं? माउंड. माउंड मीन टुगेदर और पाइल, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसकी कलेक्शन, उसका ढेर, जिसको हम उर्दू में ढेर भी कहते हैं. द टुगेदरनेस ऑफ समथिंग इन सिंध are two of the most archaeological sites. The Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in the Sindh is the most famous places in the archaeological sites. Mohenjo-daro, which is now only the ancient site, no one is living there. That's why this is called the Mound of the Dead. Mound of the Dead. Mound means together, or we can say pile. No one know about the people living there. The research is still continue. कोई भी नहीं जानता कि जो लोग यहाँ पर रहते थे वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए. उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में, फिजिकल डिस्ट्रक्शंस के बारे में कोई भी नहीं जानता. No one is quite sure what happened to the people who lived in these places. So no one know about those people, where they live, where they gone. But today in Mohenjo-daro we can still see the remains of houses, temples, baths and granary, and streets with a proper drainage system. So means कि अगर आप मोहनजोदड़ो अब भी विजिट करें तो still we have to see the remaining things of that people. यानी कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग आबाद थे, उनकी निशानियाँ हैं, उनके रिमेन्स हैं. सो रिमेन्स ऑफ हाउसेस, टेम्पल्स, हाउसेस हैं वहाँ पर, टेम्पल्स हैं, बाथ्स हैं और ग्रेनरी. व्हाट इज ग्रेनरी? ग्रेनरी is a place which is used for the saving of different grains. यानी कि ग्रेनरी किसे कहते हैं? ग्रेनी इज अ बिल्डिंग वेयर दे सेव देयर ग्रेन, जहाँ वो फसल को स्टोर करते थे ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए. सो दे यूज ग्रेनरी फॉर दैट पर्सन. So that's why they called the advanced civilization, क्योंकि वो इतनी थिंकिंग करते थे, इतने टेक्निक्स यूज़ करते थे. आजकल हम किसी ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं. उस टाइम के हवाले से, उस टाइम के अकॉर्डिंग दे यूज द ग्रेनरीज, द प्लेसेस वेयर दे सेव देयर ग्रेन्स, एंड द स्ट्रीट्स विद अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. प्रॉपर सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करते थे ताकि अब जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उन ड्रेनेज सिस्टम को कंबाइन करने में, उनको एक सिस्टम से चलाने में, प्रॉपर वे में चलाने के लिए. सो दैट्स वाई दे कॉल द एडवांस सिविलाइजेशन. टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. What is civilization? Civilization is the society, culture, living style in particular era of particular people, और we can say वो society, culture को, उनके living standard को किसी particular time में, किसी यानी कि जिस तरह वो लोग रहते थे, इस सब को civilization कहते हैं. Like around the area of and the Indus Valley civilization lives around the area of the Indus River, and they lives about before 2600 before the current era. So these were called the Indus Valley civilization. उनको हम Indus Valley civilization क्यों कहते थे? क्योंकि वो इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध के अराउंड में वो एरिया पाया जाता था जहाँ वो रहते थे. They were called the advanced civilization क्योंकि वो एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करते थे.
दे यूज्ड व्हील्स, मेड पोट्स बनाते थे, डिफरेंट बर्तन बनाते थे, वेजल्स यानी कि शिप्स और लार्ज बोट्स बनाते थे। दे मेड थिंग्स ऑफ मेटल्स, कॉपर से वो डिफरेंट चीज़ें बनाते थे। दे आल्सो मेड क्लॉथ्स, वो क्लॉथ्स बनाते थे। हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहनजोदड़ो, the Mound of Dead is in Sindh are two major most famous archaeological sites. इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो कि फेमस है वो कौन कौन से, एक मोहनजोदड़ो है, एक जो है वो हड़प्पा है जो कि पंजाब में लोकेटेड है। मोहनजोदड़ो को हम माउंट ऑफ द डेड क्यों कहते हैं? माउंट कहते हैं एक जहाँ पर कोई चीज़ टुगेदर हुई होती है या पाइल हुआ होता है इकट्ठा। सो माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो को क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी को नहीं पता कि द पीपल लिविंग देयर वेयर दे गॉन, वो कहाँ गए, किसी को नहीं पता। Nobody knows about them. And Mohenjo-daro, we can still see the remains of the houses, the temples, the living of the people. उनकी कुछ निशानियाँ हैं, like the bath, the granary system, the streets with the proper drainage system. So we can still have the remains of them. अगर हम वहाँ पर विजिट करें, हमें ग्रेनरी दिखाई देंगे, वो प्लेसेस जहाँ पर वो ग्रेन को स्टोर करते थे, बाथ्स, टेम्पल्स होंगे, वहाँ पर हाउसेस की निशानियाँ होगी, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देगा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। योर होमवर्क इज़ टू रिवाइज द टॉपिक एंड क्लियर द टॉपिक क्लियरली एंड थॉरली। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।